So today's lecture is on quantum magnetics. Quantum magnetics is a field which comprises of quantum mechanics plus magnetism. Quantum mechanics plus magnetism. So what is the advantage of making a connection between these two? Uses spintronics in spintronics where we have spintronics is being considered. Now, why spintronics has the capability of energy efficient electronics. What is actually energy efficient electronics? That means very low power electronics. Now, in normal electronics, you have resistance. When you are considering the flow of electrons, considering the charge of the electron, Q. But in spintronics, we take into consideration the spin of the electron. So, due to that, scattering is less and we have energy efficient electrons. Now, apart from that, apart from these two, quantum magnetics is used in quantum computing. Quantum computing in sensors and neuromorphic devices. What is a neuromorphic device? It takes into consideration the neuron transmission. You know this meaning of this word synapse. Synapse का मतलब है synapse का मतलब है junction between two neurons. That means if you have a nerve cells like this, एक nerve cell और ऐसा है, उसमें neurons ऐसे हैं, और there is one more nerve cell like this. So the transmission of signal that is taking place between two separate nerve cells, इसको हम लोग बोलते हैं synapse. So आजकल जो devices हो रहे हैं, जो new generation electronic devices हैं, they are considering the synapse of the human brain. ठीक है, जैसे मान लो, जस्ट गिव एन एग्जांपल, मान लो एसी है ना, एक स्टूडेंट है जो पढ़ रहा है और एक ऑफिसर,
दोनों का रिक्वायरमेंट सेम नहीं है. So how will the AC know कौन सा रिक्वायरमेंट है? It knows the requirement by this neuron transmission. इसको हम लोग बोलते हैं EEG. जैसे ECG होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. जैसे practicing and work down the line. So it is from the brain. Brain waves transmission. Because इसमें actually you have AGI. You know what is an AGI is? It's an advanced state of AI. AI, artificial intelligence. Artificial intelligence का machine level of this. इसका advanced stage है AGI. That G stands for general. Means the machine will be able to think or take decisions of their own. So it's not yet into practice. इसके ऊपर research हो रहा है, but quantum magnetism has a role to play in neuromorphic transmissions or neuromorphic devices. अच्छा, now let us come to the very basics. जैसे मैंने कहा कि the resistance normal electronic devices में होता है, joules heating होता है. लेकिन spintronic devices में there is no joule heating because the transmission is taking place through spins, transmission and switching and data storage. Based upon spins. Right. Now, why magnetism is put into this aspect? Because magnetism का जो whole basic foundation है, that is based upon spins. Let us try to understand the significance of spin. What is a spin? It's an angular momentum. Yeah. So we have nucleus, you जानते होंगे. Electron is revolving around the nucleus. तो इसका एक angular momentum होगा. Electron is revolving around its own axis. तो इसका भी एक angular momentum होगा S. Okay, L and S, or they combine to form G, which is known as the total angular it is called SOC, spin orbit coupling. पूरा जो मैग्नेटिज्म है that is based upon this spin, which is an intrinsic angular so now कोई भी चार्ज पार्टिकल any charge particle is revolving in this fashion, तो उसका एक angular momentum कैसे होगा? Basically हम इसको बोले S, और correspondingly on the opposite side we have a magnetic moment US. Now, you know that capital S
is equal to square and calculus is equal to s into s plus 1 because where s is the spin quantum number. This is the spin angular momentum. This is the spin angular momentum. This is the spin quantum number, and if we apply magnetic field in the z direction, Sz is equal to ms h cross. Ms can take value plus azimuthal formula. ये तुम लोग जानते हो already studied. अच्छा, now this spin, this is actually an operator. Quantum mechanics में everything becomes an operator. So spin operator, it can be in the three directions, sx, sy and sz. ये vector है, right? So any spin operator can be expressed as like this. क्वांटम मैकेनिक्स हुआ है ना तुम लोग का, स्टार्ट हुआ है, तो तुम लोग हुआ है कि ऑलरेडी ओवर है ना. तो पॉली स्पिन मैट्रिसेस, यू नो, पाउली स्पिन मैट्रिक्स Sx, सिग्मा y एंड सिग्मा z हुआ है ना, पाउली स्पिन मैट्रिक्स. सो द स्पिन इज बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पाउली स्पिन मैट्रिक्स. Direction में so I can present this one as equal to 0, 1, 0. ये है 0 minus I 0. ये वाला है मैं इससे इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. नाउ दिस पाउली स्पिन मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि इसका ट्रेस एट द डायगोनल ट्रेस ऑफ द पाउली स्पिन मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0. ठीक है. डिटरमिनेंट of a Pauli spin matrix is also equal to 0. और इसका जो आइगन वैल्यू है is equal to plus minus 1. ठीक है. प्लस माइनस 1 सिग्निफाई क्या करता है, जो ns के दो वैल्यूज हो सकते हैं उसको. ये जो प्रॉपर्टी है इक्विवेलेंट ऑफ सिग्मा i इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि पाउली स्पिन मैट्रिसेस आर हर्मिशियन. हर्मिशियन मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? कुछ वेर इसको हर्मिशियन मैट्रिक्स, राइट? मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज conjugate, it is equal to matrix, and we call the matrix as a Hermitian matrix. और इसको कभी भी ऐसे एक dagger भी होता है. So what does it signify? The quantum mechanics में कोई अगर matrix मेरा Hermitian है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि my values, eigen values are real. Real, और जो मेरा vector space है, that is orthogonal. जैसे कि x, y, z है, real eigenvalues and orthogonal vector space. तो इसकी और एक प्रॉपर्टी है पॉली स्पिन मैट्रिक्स की. एनी पॉली स्पिन मैट्रिक्स का स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट 1 वैल्यू. Secondly, sigma I into sigma j
into I x theta I j k sigma ये वाला जानते हो क्या क्या बोलते हैं इसको? क्रोनिकल डेल्टा पता है ना? क्रोनिकल डेल्टा डेल्टा आई जे इसका मतलब क्या है? क्रोनिकल डेल्टा का मतलब इट इज इक्वल टू 1 is equal to 0 is equal to 1 when I is equal to j is equal to 0 when I not equal to j. ठीक है, जरूर पढ़ा होगा क्वांटम मैकेनिक्स क्रोनिकल डेल्टा. टेंशन पॉइंट. उसी तरह से ये जो मैंने टर्म लिखा है यहाँ पे एक्सेलन आई जे के इट इज कॉल्ड लेवी-सिविटा सिंबल. लेवी-सिविटा सिंबल. तो लेवी-सिविटा सिंबल का मतलब है इट विल गिव अ वैल्यू 1, it will give a value 0. In two conditions, it will give a value when I, j, k are in order. That means if I have I, j, k as 1, 2, 3 or 3, 2, 1, so it is cyclic. 1, 2, 3, 3, 2, 1 or 2, 3, 1, then I will get a value 1. And if it is not, then I will get a value 0. So it means that if I into j, sigma I into sigma j is equal to I sigma k, but sigma j into sigma I is equal to minus I sigma. There are some basic facts you should know. So this is the spin is the thing which is causing, which is giving rise to magnetism. और जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम लोग बोलते हैं ना, जो ऐसे करके हम लोग साइन देते हैं, दिस साइन, इसका मतलब क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पिन एंगुलर मोमेंट. इसके बारे में नहीं बात. तो if the movement is clockwise, we give a value minus 1, minus 1, minus 1. And if it is anti-clockwise, then it is plus 1. Sorry, minus half. Minus 1 plus 1. ठीक. Okay, और इसका जो हर्मिशियन है, so I can represent this one as ये जो टर्म है इसको लैंग्वेज की स्प्लिट लैंग्वेज इज प्रेडिक्टेड. इसका मतलब है इफ इट इज अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर इस पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूँ तो इट विल स्प्लिट अप इनटू टू एनर्जी लेवल्स. Zeeman effect पढ़ा है ना? Zeeman effect पढ़ा है? प्लस टू में पढ़ा होगा. Splitting of magnetic fields, lines of force into two directions. So splitting energy level के splitting को denote.
ना इसका बिग सिग्निफिकेंस है. So these are the reasons. So जो हम लोग magnetism के बारे में बोलते हैं, there are different types of magnetism. एक है para, dia, ferro, ferri, para, dia, ferro, ferri. So magnetic. अगर कोई मटेरियल है तो बेसिकली वी बीन फेरोमैग्नेट एंड टू सम एक्सटेंट फेरोमैग्नेट. तो यहाँ पे नॉर्मली मेरा जो हैमिल्टोनियन H, हैमिल्टोनियन इज एक्सप्रेस्ड एज इक्वल टू H0 प्लस H XC plus HS. हैमिल्टोनियन. तो ये हर एक हैमिल्टोनियन कंपोनेंट का कुछ कुछ रीडिंग है. दिस इज द अनपर्टर्ब्ड स्टेट of the ground state routine. लेकिन in the case of ferromagnetism, there is an exchange interaction taking place. C is equal to minus 2 sigma. This is an exchange interaction, or this J is called an exchange that means. अच्छा, ये जो मैंने लिखा है I less than J, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है when the interaction is taking place between very two close spins. कभी भी ऐसा वाला सिंबल है, इसका मतलब इंटरेक्शन मतलब सामने वाले किसी स्पिन से हो रहा है. मतलब 1 and 2, इट इज़ नॉट 1 and 100. ठीक है. तो बेसिकली क्या होता है फेरोमैग्नेट्स में, जैसे कि पीरियोडिक टेबल में लिखो आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये फेरोमैग्नेट्स है. 3D 4s ट्रांजिशन एलिमेंट्स मिलता है. और इनमें क्या होता है, what is causing them to be magnetic in nature? Unpaired spins. We have unpaired spins. So apart from having an unpaired spins, what is happening? These unpaired spins, Si and Sj, they reinforce each other. एक दूसरे को reinforce करते हैं. So that is called Heisenberg's moment. So this reinforcement is expressed mathematically by this expression: exchange interaction. Two close spins exchange and they reinforce. Now, if the value of J is greater than 0, we will have ferromagnet. And if value is less than 0, we will have an antiferromagnet. Okay. Or the value of J is greater than 0, but let's calculate as K on J dash, but J dash is less than J, then we will have a ferromagnet. That means it is positive but not as positive as. So ये तीन चीज़ें डिफाइन करते हैं. अच्छा, next is this one, spin orbit coupling. Spin orbit coupling is very much important aspect in quantum mechanics.
इसी से we have different types of new types of materials. जैसे कि there is a material called topological magnetism. There is a material called WSM. This is kind of vein, semi metal. So what is the advantage of these topological? They are basically topological materials. You could classify them as what is actually a topology? जो वर्ड आता है topology हम लोग यूज करें, इसका मतलब क्या है? Topology is coming from mathematics. इसका एक तरफ से मीनिंग हो सकती है the property which is based upon the structure. ये बोलने से थोड़ा सा ब्रॉड आइडिया हो जाएगा. Topological materials का एग्जाम्पल अगर देना चाहते हो, structure which can support topology, so you can either use a coffee cup, ठीक है, or a donut. Coffee cup and donut are topological structures. कैसे? कॉफी कप का जो ये वाला जो होल, this hole, this hole will not affect the property of property of the cup, infinite. उसी तरह से डोनट का ये वाला जो होल है, that will not affect the property of the material. उसी तरह हाँ मैं बोलता हूँ, तो this is called a genus. Genus. So if you relate the same analogy with a topological material, टोपोलॉजिकल मटेरियल में जो एक चीज़ होती है जैसे कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, मैंने डिस्कस किया, राइट. इसका मतलब है, गिव यू एन एग्जांपल, मान लो एक टू वे रोड, रोड डिवाइडेड बिटवीन दीज रोड, जैसे गाड़ी जा रहा है, इस डायरेक्शन, और इसमें से मान लो गाड़ी, so since there is a divider, the cars which are moving in this side are not interacting with the cars moving in that side. So इसमें जो structure है, that is defining the property, or rather I should say that is not affecting the property. तो यही चीज़ यहाँ पे हो जाता है कि due to this spin orbit coupling, there is something called a spin orbit, or sorry, spin momentum law. जिसको हम लोग बोलते हैं TRS. TRS का मतलब है, तुम लोग जो सोच रहे हो वो नहीं, ठीक है. TRS का मतलब है टाइम
reversal symmetry. कोई भी फिजिकल प्रोसेस को खास करके क्वांटम लेवल में इट इज गवर्न बाय CPT सिग्नेचर, चार्ज पैरिटी एंड टाइम. चार्ज एंड पैरिटी तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे टाइम है. इसका मतलब है ये इफ यू रिवर्स द टाइम द फिजिकल प्रॉपर्टीज विल रिमेन द सेम. तो बेसिकली ये जो स्पिन मोमेंटम लॉकिंग है ये इट इज एज इफ I am locking the momentum of the spins due to that it is not interacting with the spins in the other way. Now direction is space. Okay, so this is actually the spin momentum locking. Or what is the advantage of having this spin momentum locking? Scattering nahi hoga, they will not interact. So therefore topological insulators are those materials which are insulating in the bulk but they are conducting at the what is the property that is causing this topological activity? That is the time reversal symmetry causing spin momentum bulk. ठीक है. अच्छा, now ये जो topological material है, now let us come to another aspect जो I have already told you in this class. अच्छा, और एक I just want to do one more thing. स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से क्या क्या इफेक्ट होता है? एक इफेक्ट होता है स्पिन मोमेंटम लॉकिंग. दूसरा एक इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं रैशपा स्प्लिटिंग. Rashpa splitting is based upon Rashpa effect. What is the Rashpa effect? Rashpa effect is simple. It is an effect where in those crystals which are non-symmetric, जिसमें कि सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, वहाँ पे they have a residual electric field existing in them. Piezoelectric material, for example. So that residual electric field, what it does, it interacts with the electron momentum. Now, since electron has, it can have plus, it has two different states, plus and minus. So this leads to Rashpa splitting. So the dispersion relation है 2A.
एक रैशफोर्ड टर्म आ जाता है इसमें, रैशफोर्ड टर्म। नॉर्मली तो ये होना चाहिए ना, टू स्क्वायर ब्रैकेट में, लेकिन इसमें क्या होता है, दिस इज रैशफोर्ड टर्म, तो दिस इज अनदर स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स, दैट इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, सो दिस इज हाउ द स्प्लिटिंग विल बी क्लोज। सो ये तो डैश का कांस्टेंट है, सो बेस्ड अपॉन 3 सेंटी वाई, क्योंकि यहाँ पे मैं 2D सरफेस की बात कर रहा हूँ। These are the split. So these are the two effects which occur due to spin orbit coupling. Okay? So वो कहाँ पे थे? Let us go back. We were discussing quantum magnetics, and we have found that it is used in spintronic devices, energy efficient devices, and other aspects as well. So then try to understand what is a spin, which is the reason of any magnetic effect, or in quantum magnetics how the spin is getting affected. So one of them is due to this topological effect or spin orbit coupling. उसके बाद there are two more aspects. एक है magnons. I think I have already discussed what is a magnons is. ठीक है, और दूसरा है QSL. QSL का फुल फॉर्म है क्वांटम स्टेट magnons and QSL. This is a quantum magnetics. Something which is moving. Magnons में already discuss किया है. What are magnons? Phonons जैसे होता है ना. What are phonons? Phonons are related to lattice vibrations. Crystalline lattice में जो vibration. Quantum state liquid. Quantum state liquid. Phonons are quantized lattice vibrations of the crystal lattice. But in magnetic material, we are considering a magnetic lattice. Magnetic lattice मतलब ferromagnets. There are magnetic dipoles arranged in this fashion. This is a magnetic lattice. यहाँ पे जैसे क्रिस्टल्स हैं, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स,
any vibration occurring in the crystal lattice, which we express in terms of phonons, which are actually bosons. Bosonic. इसी तरह से if there is a vibration taking place in a magnetic lattice, हम लोग उसका जो spin waves जनरेट होता है, we can express those spin waves in terms of magnons. Last class में there is a chemical potential of magnons, and due to that we have a magnon current. क्योंकि अल्टीमेटली तो हमारा स्पिन करंट को गवर्न करता है. And these magnons are good information cables in quantum computing of electronic devices. The advantage of these magnons is they can travel a large distance. Because the damping effect होता है वो बहुत कम होता है. Damping effect is about 10 miles per hour. Reverse constant. It's the lifetime of a magnon. Order of microseconds. Due to these properties, the magnon can move very large distance. Very large distance का मतलब है of the order of millimeters. Quantum level में millimeter का मतलब it's very large distance. It can move without getting affected. जो कि normal electrons में करना मुश्किल है. तो केवल अंदर में स्टैंड करता है. So magnons. Now, what is a quantum state liquid? QSL. It's very simple. हम लोग जो भी you know the second law, the third law. What does the third law say? Thermodynamics. S tends to 0 at 0 K. मतलब there won't be any entropy, perfectly ordered state होगा at 0 K. But quantum state liquid में ऐसा नहीं है. Quantum state liquid में even at 0 K there is some disorder. इसको liquid क्यों बोल रहे हैं? Why we are calling it a liquid? Analogy करो crystalline material के साथ. क्रिस्टल्स में क्या होता है? देयर आर क्रिस्टल्स मतलब एटम्स आर इन परफेक्ट प्लेस, लेकिन इफ इट इज नॉट इन अ परफेक्ट स्पेस, इट इज रैंडम डिसऑर्डर, तो यू कैनॉट कॉल इट एज अ amorphous material, just consider it as an amorphous material. But apart from having an amorphous material, they have perfect disorder is existing in the different magnetic moments. They are not in ordered state. Even at 0, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्वांटम स्टेट. ठीक है, तो इन सब का एप्लीकेशन होता है क्वांटम मैग्नेटिक्स. इसके बाद कौन सा क्लास है? हाँ, इसका आगे क्या सर? बहुत और एक चीज टोपोलॉजिकल मटेरियल्स पीएम टोपोलॉजिकल मटेरियल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? पढ़ा है टोपोलॉजिकल इंसुलेटर्स, देन वी हैव स्टडी और एक टोपोलॉजिकल मटेरियल है, इसको बोलते हैं WSM. अच्छा, एक चीज़ और मतलब है कि क्वांटम स्टेट लिक्विड्स में देयर इज वन मोर पॉसिबल पार्टिकल, इसको बोलते हैं स्पाइनल्स.
ठीक है, तो बहुत सारे क्वासी पार्टिकल्स, एक क्वासी पार्टिकल और एक से लास्ट। So we are doing with quantum magnetics, QMQMQ magnetics. इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं for spintronic devices. So basically we are talking about topological materials. इसमें we have studied about topological insulators. इसमें भी WIG is a topological insulator, magnetic insulator. Another material topological insulator is WSF. WSF stands for wave semi मेटल। सेमी मेटल का मतलब क्या है? मेटल जीरो बैंड गैप। It is a band gap. The conduction band and valence band are not overlapping, but they are also not touching. मतलब ऐसे। ठीक है, coming up home. So base semi-metal consists of something called Weyl nodes. There is a Weyl node at 2 dimensions. Basically, all are 2-dimensional materials. इसका मतलब है कि कोई वेल मेटल के टॉप सरफेस पे जो अगर चलेगा तो देयर विल बी वेल नोड्स लाइक दिस। हर एक वेल नोड में देयर विल बी अ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। यहाँ पर एक होगा Dirac points. This is actually so बोल सकते हो it's sort of graphene. ग्राफीन में भी एग्जैक्टली दिस आल्सो सेमी-मेटल, लेकिन डिफरेंस है यहाँ पे कोई नोड्स नहीं होगा ग्राफीन के, इट इज ओनली वन। अच्छा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नोड्स? इसमें इंटरेक्शन होगा, यहाँ पे जो फर्मियॉन्स these fermions are massless. Since it is massless, इसका जो velocity है वो is very high, around about 10⁶ मीटर पर सेकंड। जो वेलोसिटी कभी नॉर्मल इलेक्ट्रॉन अचीव नहीं करता, मतलब ओनली 3 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। सो दैट इज व्हाई इसका जो कंडक्शन है इज वेरी हाई, कंडक्शन इज एक्सट्रीमली हाई। नाउ ये जो कर्वेचर हुआ है, दिस कर्वेचर नॉर्मल कोई चार्ज and I would like to इसमें मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ। It will move in a straight line, right? If I apply a magnetic field,
will be helical. Lorentz force is equal to I think you know this helical part. उसी तरह से सपोज आई नॉट गिवन एनी मैग्नेटिक फील्ड, मैंने मैग्नेटिक फील्ड दिया नहीं और मेरा चार्जलेस डिराइव्ड फर्मियंस इसको मुझको मूव कर रहा है, सो देयर शुड बी एन इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो दैट इक्विवेलेंट मैग्नेटिक फील्ड इसको बोलते हैं बाय दिस सिंबल called Berry curvature. Berry curvature is simply the magnetic field in the reciprocal space. ठीक है. अच्छा, ड्यू टू दिस Berry curvature कंडक्शन होगा. मान लो ये XY प्लेन है, तो मेरा जो Berry curvature का कंडक्शन है दैट इज I can write that one is sigma xy. Simply I can write sigma xy is equal to summation इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो. दिस dz means what? dz means k स्पेस है. dz मतलब यूनिट सेल ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस. पता ना, यू हर्ड अबाउट विलोवाजोर नहीं मैंने डिस्कस किया है. विलोवाजोर बिगिनर सीड सेल पर है, बिगिनर सीड सेल. You know what is the meaning of biginary seed cell? It's a unit cell. एक तो नॉर्मल यूनिट सेल हो गया, ठीक है. दूसरा यूनिट सेल होता है दैट वी कैन ज्योमेट्रिकली कंस्ट्रक्ट. अच्छा, उसमें हम लोग बाद में बात करेंगे. सो यू कंसिडर दिस एज द यूनिट सेल ऑफ ए रेसिप्रोकल लैटिस. तो इसका मतलब है इट इज बीइंग इंटीग्रेटेड थ्रू आउट रेसिप्रोकल लैटिस एंड दिस रिप्रेजेंट्स द फूरियर ट्रांसफॉर्म. और डी क्यूब के मतलब वॉल्यूम के स्पेस है ना, सो डी क्यूब के लिए वॉल्यूम एंड 2 पाई कांस्टेंट, क्योंकि हर एक रेसिप्रोकल वेक्टर के सामने एक 2 पाई लगता है ना. रेसिप्रोकल वेक्टर रहता है ना, ये तो जरूर पढ़ा होगा वेक्टर्स में. इफ यू हैव a1 a2 एंड a3, तीन अगर वेक्टर्स हैं, इससे रेसिप्रोकल वेक्टर्स क्या होगा? v1 विल बी by a2 cross a3 divided by a1 dot a2 cross a3. I think you know all these things. So ये 2 by factor है, तो b1 and b2 will be two lattice vectors of the reciprocal lattice. इसीलिए ये जो टर्म यहाँ पे आता है, this gives you the conductivity, मतलब and this is the Berry curvature. So इसको बोलते हैं कि in the K space there is an inbuilt magnetic field. तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे हम लोग 2D स्पेस पे जा रहे हैं, there is an inbuilt electric field, there is an inbuilt magnetization, inbuilt magnetic field. तो इन दोनों में एक्सचेंज होता है फर्मियंस, और इसको फर्मी कर्व भी बोलते हैं.
ग्राफीन के साथ कंपेयर करें तो ग्राफीन में ऐसा कोई नोट्स नहीं होते, डेफिनेटली सिंपली एक ही पॉइंट होता है जहाँ से इंटरेक्शन हो सकता है। इसको मासलेस भी बोलते हैं बिकॉज इट इज बेसिकली एन पीके। ठीक है, सो डी बाई डी के इज कॉन्स्टेंट, है ना। This is a good philosophy. 1 by h cross, or effective mass is equal to 1 by h cross d square E by dk square. Since d by dt is a constant, so this is equal to 0. So इसका effective mass 0 है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं massless. So topological quantum material में जो wave symbol है उसमें I also have massless fermions, and that is why it is making the top surface very highly conductive. इसका bulk insulator है लेकिन ठीक है। तो let us just recap. अभी इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। We studied quantum. We actually tried to understand what is quantum magnetic space. It is basically quantum mechanics plus magnetism, right? The foundation of the magnetism is spin. In quantum magnetics, and so there are different types of materials. For example, ferromagnetic, antiferromagnetic. So in all these cases, the exchange, Heisenberg's exchange reaction comes into play. Again, when we go to quantum magnetics, there is one more term associated with it that is called the spin orbit coupling. Right. And with this spin orbit coupling, I have the different topological materials like topological insulators, wire insulators, and the effect that this spin orbit coupling has is Rashop's rating, or spin momentum law. तो यहाँ पे this spin momentum law is to topological insulators because it is providing a hindrance free motion. Okay. So apart from that, we have another aspect that is related to the vibrations in the magnetic lattice from the fermions. This is the vibration. And lastly, we studied about quantum state groups, where the third law is valid in spinors. ठीक है, कुछ क्वेश्चन है तो देख लो। नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस अबाउट fermions, Majorana, fermions, and some application of quantum magnetics in different aspects, जैसे कि fermionics,
data storage, or biomedical fields, biomedical applications, and also support materials, which materials we will already discussed here. Specifically pick up some materials which shows these sort of effects. Because और एक चीज़ इसको समझना है कि topological crystallism is gas and हम लोगों ने WSM डिस्कस किया है, हम लोग डिस्कस करेंगे Dirac sediments. और एक स्पेशल एक सेक्शन होगा ऑन वॉसिफायर्स, बार बार आ रहा है ना, ठीक है।